नमस्कार करो स्टार्ट सर. Assalamu alaikum to everyone. We will start our lecture number 1 by general reaction mechanism of organic reactions. This will be our lecture number 1. In this topic we will study all the reactions or the general mechanism of the reaction that are involved in organic reactions. सारी की सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस का एक बेसिक मैकेनिज्म होता है और उस बेसिक मैकेनिज्म को हम कहते हैं जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म. इस टॉपिक को लेने से पहले कुछ बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म. तो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म, लेट मी राइट एनी रिएक्शन ऑफ द फॉर्मूला CH3 Br प्लस OH नेगेटिव. ये रिएक्टेंट्स मैंने लिख दिए. जो मेन रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा ऑर्गेनिक रिएक्शन में उसको हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं. सो विल राइट इट्स नेम एज द सबस्ट्रेट प्लस OH नेगेटिव. OH नेगेटिव दैट अटैक्स द सबस्ट्रेट. इस OH नेगेटिव को हम कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट. दिस इज अटैकिंग रिएजेंट. जब ये दो कंपाउंड्स आप इसमें रिएक्ट कर लेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा ऑब्वियस फ्रॉम द रिएक्शन ब्रोमीन विल बी रिप्लेस्ड बाय OH नेगेटिव. तो आपका प्रोडक्ट जो आएगा दैट विल बी CH3OH प्लस Br नेगेटिव. सो जनरल फॉर्म ऑफ द रिएक्शन ये है. वी राइट रिएक्टेंट्स विल कंबाइन टू गिव द प्रोडक्ट्स. The main reactant that reacts in an organic reaction is also called as substrate. और जो substrate पे अटैक कर लेगा उसको हम कहते हैं attacking reagent. And in this reaction, attacking reagent is OH negative. And it will give the product, and product formula CH3OH and Br negative. Generally, जो हम रिएक्शन लिखते हैं उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस कुछ इस तरीके से प्रोसीड होते हैं. बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट वी विल गेट वन मोर इंटरमीडिएट स्पीच जिनको जनरल एंड इंटरमीडिएट्स कहते हैं. सो जनरली अगर हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं वी राइट रिएक्शन लाइक दिस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. बट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या होता है, प्रोडक्ट बनने से पहले हमें एक हाईली अनस्टेबल फ्रैगमेंट्स मिलते हैं जिनको हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट्स. सो बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, देन इंटरमीडिएट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ सो मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस. सो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम इस बेसिस पे दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. या तो रिएक्शन इस फॉर्म में होगा कि रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाएगा, या तो इस फॉर्म में होगा कि प्रोडक्ट बनने से पहले इंटरमीडिएट बनेगा. पहले रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट में, देन इंटरमीडिएट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में. इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन जो ऑर्गेनिक में है ये एक ही स्टेप में होती है. दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. But this type of reaction that does not occur in a single step, at least इसमें दो steps होते हैं. पहले step में intermediate बनेगा और दूसरे step में intermediate convert होगा product में. This type of reaction जो खाली एक ही step में होती है इसको हम कहेंगे concerted reaction और concerted mechanism. और ये वाला है obviously इसको हम कहेंगे multi step या नॉन कंसर्टेड रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन और नॉन कंसर्टेड रिएक्शन. सो हमें दोनों रिएक्शन पे नजर रखनी है कि हमारी रिएक्शन जो है इज इट कंसर्टेड रिएक्शन और इज इट मल्टी स्टेप रिएक्शन. अगेन गोइंग टू द रिएक्शन, जो ये वाली रिएक्शन है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी रिएक्शन दैट सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन and some bonds are formed in any type of reaction. The older bonds are broken and the new bonds are formed. If we go to this reaction, इस रिएक्शन में कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड टूट जाता है, it breaks.
और नया बॉन्ड जो बनता है दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड OH, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है. इन एवरी रिएक्शन देयर इज बॉन्ड ब्रेकेज एज वेल एज बॉन्ड फॉर्मेशन. तो बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन की टाइमिंग क्या होगी, उस बेसिस पे हमें मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करना होगा. बिफोर गोइंग टू दैट वी शुड नो अबाउट behavior of the substrate in the reaction. We should also know about the type of attacking reagents that we are going to use in the type of reaction. And third point, we should also know about intermediates. Class 11th में आपने पढ़े होंगे reaction intermediates, जैसे कार्बोकेटाइन है, कार्बोएनाइन है, free radicals है, and so on. And again you will get the formation of product. ये किस तरीके से होता है, कितने स्टेप्स में होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस तरीके से होगा, ये सारा कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन में जब आएगा, उसी को हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस. द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेप्स दैट विल शो, दैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ रिएक्टेंट is converted to product that's called as a reaction mechanism. So reaction mechanism understand करने से पहले हमें कुछ basic चीजें पता होनी चाहिए. The first basic thing that we should know is nucleophiles. Nucleophiles and nucleophilicity. Nucleophiles and nucleophilicity. What is the nucleophile and what is its nucleophilicity? ये basics हमें understand होनी चाहिए. Nucleophile क्या है और nucleophilicity आप किसको कहते हैं? Nucleophile, any atom or a group of atoms which contains at least one lone pair, जिसके पास कम से कम एक lone pair हो, that will be able to donate a lone pair of electrons or electron pair, that will be called as a nucleophile. And the reactivity of a nucleophile is called as nucleophilicity. मतलब A, मैंने एक एटम A लिखा, इसके पास एक lone pair है, so ये lone pair इसके पास है, इसका मतलब इसको tendency होगी to donate this lone pair, and hence we call this as nucleophile. As far as nucleophile is considered, I will write its definition: any atom or a group of atoms that has the tendency to donate an electron pair. That's nucleophile. This is the definition of nucleophile. A condition, कौन सा compound, कौन सा molecule behave कर सकता है as a nucleophile? But its condition होता है. Condition एक ही है, presence of at least one lone pair of electrons. कम से कम एक lone pair of electrons. Since Lewis base की definition भी यही है, ऐसा group of atoms या ऐसा atom जिसके पास कम से कम एक lone pair, तो मैं कह सकता हूँ all nucleophiles or Lewis bases. All nucleophiles are Lewis bases. अगर example लें, OH negative, all anions, X negative, NH2 negative, water, RO negative, ammonia, etc. So many nucleophiles that are used in organic. OH negative, X negative, F negative, Cl negative, Br negative, O negative, I negative, NH2 negative, water, RO negative, NH3 ammonia. वाटर में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, हमें कम से कम एक लोन पेयर चाहिए.
So these are the basic requirements of the nucleophile. कोई भी atom, a group of atom that has a tendency to donate an electron pair, जो electron pair donate कर सकता है, that's called as a nucleophile. Condition for the nucleophile is presence of at least one lone pair of electrons. And third, all the nucleophiles are Lewis bases. Examples आपके सामने. Now, ये चीजें तो basic चीजें आपको पता है. Now we should understand what is nucleophilicity. Nucleophilicity है क्या? Nucleophilicity, in simple words, I will say, it is the reactivity of a nucleophile. किसी भी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी. Nucleophilicity. Nucleophilicity. It is the reactivity or tendency of a nucleophile to get involved in a nucleophilic reaction. Involved in a reaction. That's nucleophilicity. We talk about nucleophilicity of two nucleophiles A and B. इन दो में से, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनमें बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? इन दो में से जिसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, टू गेट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, टू रिएक्ट एट अ फास्टर स्पीड, वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा. अगर A की रिएक्टिविटी ज्यादा है B के कंपैरिजन में, सो विल से A इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन B. अगर B की tendency ज्यादा होगी to react in a nucleophilic reaction, then B is a better nucleophile than A. So इन दो में कौन सा होगा, वही nucleophilicity हमें डिस्कस करना होगा. We need to discuss this in detail. There is another term जो इसके साथ parallel आता है, that is basicity. Basicity is the reactivity of a base. Since अभी already हमने लिखा कि हर कोई न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस भी होगा. लेविस बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. सो basicity is the reactivity of a base, and all Lewis bases and all nucleophiles are Lewis bases and all Lewis bases are nucleophiles. So basicity क्या nucleophilicity है, या क्या nucleophilicity और basicity सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ये चेक करना है ऑर्गेनिक रिएक्शन में. तो अब जो हमारा टॉपिक है, बिफोर गोइंग टू द रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड व्हाट इज बेसिसिटी. क्या ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट्स है या इनके बीच में कोई डिफरेंसेस है? इफ देयर आर डिफरेंसेस, देन व्हाट आर द डिफरेंसेस? हाउ डू वी यूज दीज टर्म्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस? दैट्स हाउ डू वी यूज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड हाउ वी यूज बेसिसिटी. तो स्टार्टिंग विद द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, हमारा जो टॉपिक अब रहेगा दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस. सो आई एम राइटिंग द हेडिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी versus basicity in organic reactions. Organic reactions. Starting this topic, nucleophilicity and basicity. Already हमने पहले डिस्कस किया है, न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट वन लोन पेयर, और बेस की भी वही रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट वन लोन पेयर. Every nucleophile is a Lewis base and every Lewis base is nucleophile. क्या हम nucleophilicity और basicity सिमिलर कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं या इनमें कोई डिफरेंसेस है? So we'll start with that. Let me write A. A के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है. ये A बिहेव कर सकता है both nucleophile as well as base. Now, ऑर्गेनिक रिएक्शन में कब मैं इसको न्यूक्लियोफाइल कहूं और कब मैं इसको बेस कहूं?
first of all, let me explain its basicity. This is A. इसको आपने H positive दिया. This is the Lewis base, or we can also say the Bronsted base. इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज किया to accept H positive, and it gives AH. This A, containing at least one lone pair, is said to be a base if it accepts proton to form H. Again, I repeat my words. Any molecule or any ion is said to be a base if it accepts proton to form AH. So I will write here base. Any molecule or ion and that has the tendency to accept H positive. That will be called as base. And tendency of this base to accept proton is called as basicity. And this tendency is called as basicity. Again, base. Any molecule or an ion that has the tendency to accept H positive, yani proton, is called as a base. And this tendency to accept the proton is called as basicity. Next point is very important. If I write this as a base, since already you may have studied in class 11th that Bronsted-Lowry concept mein every base has its conjugate acid and every acid has its conjugate base. If it is a base, it accepts proton to form AH. So AH will be the conjugate acid of base A. अगर ये बेस A है, इसने H positive accept किया, तो AH होगा conjugate acid of this base A. The basicity of a base is thermodynamically controlled. This is very important. Basicity of a base is thermodynamically controlled. Thermodynamically controlled. What is the meaning of this? This is very important, right? किसी भी की बेस की basicity thermodynamically controlled है. Thermodynamically controlled means it depends upon the strength of the conjugate acid or the stability of the conjugate acid. किसी भी बेस का conjugate acid जितना ज़्यादा stable होगा या जितना ज़्यादा strong होगा, उससे हम किसी भी बेस की basicity predict कर सकते हैं. That's what is meant by thermodynamically controlled. मतलब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा conjugate acid base केस में weak acid contains strong conjugate base. Strong conjugate base. And strong acid always contains weak conjugate base. If acid is strong, its conjugate base is weak. If base is weak, its conjugate acid is strong. Weak acid की जो base होगी, that will be strong, और strong acid की जो base होगी, that will be weak. Now, question arises there. I will focus on this conjugate acid. If this conjugate acid, अगर ये conjugate acid strong acid होगा, तो उसकी base weak होगी. अगर ये conjugate acid weak होगा, तो इसकी भी जो base होगी, that will be strong. Simply, I will write this in a shortcut form. Strong acid means weak base.
but it's conjugate. And weak acid means strong base. This is the universal concept that you are going to detect the basicity or the basis strength of Bronsted or Lewis base. So आप करोगे क्या? आप एसिड को चेक करोगे. अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो उसकी बेस वीक होगी, अगर एसिड वीक होगा तो उसकी बेस स्ट्रांग होगी. इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी शो 2 एग्जांपल्स. I will take OH negative and I will take F negative. दोनों के दोनों बेसिस हैं, दोनों को टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन. OH नेगेटिव को जब आप H पॉजिटिव दोगे, it is converted to water. Similarly, F नेगेटिव को जब आप प्रोटॉन दोगे, it's converted to HF. Now, इन दो बेसिस में कौन सी बेस स्ट्रॉन्ग है और कौन सी बेस वीक है, वो कैसे डिटेक्ट कर लेंगे हम? वो डिटेक्ट करेंगे हम फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड्स. ऑलरेडी वी हैव रिटन दैट अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो बेस वीक होगी, अगर एसिड वीक होगा तो बेस स्ट्रॉन्ग होगी. वाटर और HF में एज यू नो दैट HF इज द स्ट्रॉन्ग एसिड. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है and this is weak acid. If this is strong acid, इसका मतलब ये वाली बेस weak बेस होगी. If this is weak acid, इसका मतलब ये वाली बेस जो होगी that will be strong base. Strong acid HF और water में as we know HF is the strong acid, it means F negative is the weak base, and water is a weak acid, it means that OH negative is a strong base. तो अगर मैं basicity order इनमें लिखूं, so basicity order of OH and F negative will be OH negative is stronger base than F negative. It is because water is weak acid than HF. ये होगा acidity order और ये होगा basicity order. So जो एसिडिटी ऑर्डर आ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आएगा एसिड्स का, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस विल बी इनवर्स. तो इन जनरल अगर मैं दो डिफरेंट बेसिस लूंगा, उनका बेसिसिटी कंपैरिजन आपको करना होगा. फॉर इंस्टेंस आई विल टेक A and B. This accepts H positive, this again accepts H positive. It's converted to AH and it's converted to BH. इन दोनों बेसिस में कौन सी बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, वो हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ से निकालते हैं. इफ एसिडिटी ऑर्डर या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इज AH ग्रेटर देन BH, अगर AH ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है BH से, then basicity order will be B greater than A. अगर AH ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, BH कम स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब बेसिसिटी ऑर्डर होगा B greater than A. अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस होगा, अगर ये वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा. अब उल्टा देख लेते. इफ acidic strength order, acidic order BH greater than AH, then basicity order जो होगा that is A greater than, then basicity order will be A greater than B. This is about the concept of basicity. Again, I will repeat the points. Organic reaction में हम base उसको कहेंगे any molecule or an ion that has the tendency to accept H positive. ऐसा molecule या ऐसा ion जो अपना electron pair use करेगा to accept proton, that will be called as a base, and it forms conjugate acid-base pairs. Point number 2, the reactivity of that base, the tendency of that base to accept proton is called as basicity. Basicity of a base is thermodynamically controlled
we will thermodynamically control. The basicity of a base is governed by the strength of an acid or the stability of an acid. We have a rule from Bronsted-Lovely concept of acids. Conjugate acid-base pairs के लिए best rule है, if acid is strong then its base will be weak, and if acid is weak then its conjugate base will be strong. Strong acid weak base, weak acid strong base. तो उससे आप predict कर सकते हो कि कौन सी base कितनी ज़्यादा strong है या कितनी कम strong है. आपको समझाने के लिए मैंने दो bases लिए A and B. दोनों प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये दोनों के दोनों बेसिस है, and they are converted to their conjugate acids AH and BH. In the case acidic strength AH greater than BH, the basicity order will be B greater than A. In case acidic order is BH greater than AH, then basicity order will be A greater than B. This is basicity. Now let me go now to the nucleophilicity. The nucleophilicity को कैसे explain कर लेंगे and how is it different from basicity order. Now let me go to the nucleophilicity. Again I am taking A. इसके पास lone pair of electron है, तो इसने base behave किया by accepting H positive. ये nucleophile behave कर सकता है. मैं इसको कब nucleophile कह सकता हूँ? I will write a reaction here. इस रिएक्शन में A जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज कर रहा है टू मेक द बॉन्ड विद दिस कार्बन और X को रिप्लेस कर रहा है. सो आई विल राइट इट हियर लाइक दिस एंड X हैज बीन रिप्लेस्ड. नाउ लुक एट दिस रिएक्शन. In this case, A is behaving as a nucleophile. तो इस nucleophile ने क्या किया? इसने अपना electron pair use किया to make the bond with carbon, because in the product there is formation of bond between A and C. A और C के बीच में bond बना है. कोई भी ऐसा molecule, कोई भी ऐसा ion जिसके पास lone pair हो और वो अपना lone pair यूज करे टू मेक द बॉन्ड विद कार्बन, दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल. बेस में हमने किया, अगर A ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज किया टू एक्सेप्ट प्रोटॉन H पॉजिटिव, देन इट्स कॉल्ड एज अ बेस. बट इन दिस केस A अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज कर रहा है टू मेक द बॉन्ड विद कार्बन, देन इट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल. सो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? Nucleophile, a molecule or an ion containing lone pair is said to be a nucleophile if it uses its electron pair to make the bond with carbon. A molecule or an ion containing lone pair of electrons is said to be a nucleophile. Is said to be a nucleophile if it uses its electron pair to form the bond with covalent bond with carbon. A molecule or an ion containing lone pair of electrons is said to be a nucleophile if it uses its electron pair to form the covalent bond with carbon. अगर ये A अपना electron pair use कर रहा है to make the bond with carbon, it is said to be a nucleophile. लेकिन अगर यही A अपना electron pair use करेगा to make the bond with proton, to accept the proton, then it's called a base. So this is difference between a base and a nucleophile. Base अपना electron pair use कर रहा है to accept proton, but nucleophile अपना electron pair use कर रहा है to make the bond with carbon. That's called a nucleophile.
Now, reactivity of nucleophile, ability of a nucleophile, tendency of a nucleophile to make the bond with carbon, to react with the carbon is called as nucleophilicity. And this tendency is called as nucleophilicity. Nucleophilicity. The tendency of a nucleophile to make the bond with carbon, to react with the carbon, is called as nucleophilicity. So differences between base and nucleophile जो है, any molecule around containing lone pair of electrons behave कर सकता है both base as well as nucleophile. अगर ये अपना electron pair use करेगा to accept the proton, it's called as base, and that tendency is called basicity. But if it uses its electron pair to make the bond with carbon, it's called as a nucleophile, and this tendency is called as nucleophilicity. Next point is very important. Nucleophilicity of a nucleophile is kinetically controlled. I will write it here. Nucleophilicity is kinetically controlled. किसी भी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है इट्स काइनेटिकली कंट्रोल्ड. ऑलरेडी हमने बेसिक में पढ़ा है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल. दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल. व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिकली कंट्रोल? काइनेटिकली कंट्रोल को अंडरस्टैंड हम बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे. सपोज आपके पास है दो न्यूक्लियोफाइल अगेन ए एंड बी. दोनों के दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं. ये भी न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो रहे, दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल से कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे. इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल जल्दी क्विकली कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा उसको हम मेटल न्यूक्लियोफाइल कहेंगे. हाउ क्विकली न्यूक्लियोफाइल मेक्स बॉन्ड विद द कार्बन, हाउ क्विकली इट डज रिएक्ट, it's called as nucleophilicity. How quickly nucleophile makes bond with the carbon, ये हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? That can be detected quickly by the kinetics, that's rates or speed of the reaction. Suppose दो reactions मैंने लिया, A reacts with C, B reacts with C. Let me take the speed or the rate of this reaction as R1, it gives AC, and speed or the rate of this reaction as R2, and it gives BC. A is a nucleophile, B is a nucleophile. A is reacting with carbon, it's making the bond with carbon, it's again making the bond with carbon. Let me take the rate of reaction first as R1 and rate of reaction second as R2. Now, if R1 is greater than R2, the rate of reaction 1 is greater than rate of reaction 2. It means that कि पहली रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है और दूसरी रिएक्शन की स्पीड कम है. पहली रिएक्शन तेजी से हो रही है, दूसरी रिएक्शन स्लोली हो रही है. इसका मतलब ये है कि A ज्यादा क्विकली कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, B लेस क्विकली स्लोली कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है. सो बेटर न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो ज्यादा स्पीड के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्विकली बनाएगा. इट मींस न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर विल बी A ग्रेटर देन B. अगर पहली रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, रेट ज्यादा होगी, इसका मतलब A क्विकली बॉन्ड बना रहा है C के साथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर विल बी A ग्रेटर देन B. यानी बेटर न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो ज्यादा क्विकली बॉन्ड बना लेगा. इन केस R2 is greater than R1. अब अगर ऐसा हुआ कि रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट रिएक्शन, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर विल चेंज. नाउ इट इज गोइंग टू बी B ग्रेटर देन A. अगर दूसरी रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है, रेट ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि B ज्यादा क्विकली कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है इन कंपैरिजन टू A. This is how you understand kinetically controlled. So अगर मैं नटसेल में न्यूक्लियोफाइल को समअप कर लूं, any molecule RNI containing a lone pair of electrons is said to be a nucleophile if it uses its electron pair to make
बॉन्ड विथ कार्बन। अगर ये कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज कर रहा है तो इसको आप कहोगे न्यूक्लियोफाइल। एंड दिस टेंडेंसी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल टू मेक द बॉन्ड विथ कार्बन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड। आउट ऑफ ऑल द न्यूक्लियोफाइल सबसे बेहतर न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो ज्यादा क्विकली, ज्यादा स्पीड के साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। एग्जांपल्स आपके सामने है। नाउ कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। A molecule or an ion, let me take A. इसके पास लोन पेयर है, बिहेव कर सकता है बोथ बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। फर्क क्या है? अगर इस A ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज किया टू मेक द बॉन्ड विथ कार्बन, इट इज सेड टू बी न्यूक्लियोफाइल। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज कर रहा है टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव, इट इज सेड टू बी अ बेस। Reactivity of nucleophile is called nucleophilicity and the reactivity of a base is called as basicity. जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, nucleophilicity of a nucleophile is kinetically controlled. कितना क्विकली, कितना स्पीड के साथ कोई न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, that is called as nucleophilicity. What about basicity? Basicity is thermodynamically controlled. Basicity of a base can be determined by the strength of its conjugate acid. We have strong acid, conjugate base will be weak. We have weak acid, then conjugate base will be strong. Now, basicity का जो rule है, that's universal, that will never change. You will check the strength of conjugate acid, then you get the basicity order. But nucleophilicity depends upon so many factors, जो अभी हम डिस्कस कर लेंगे. It depends upon the size, it depends on the polarizability, it also is influenced by the nature of medium. कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी कहाँ पे सेम होगा, ऑर्डर सेम होगा, डिफरेंट होगा, क्यों होगा, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर लेंगे. दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिसिटी, विल बी बेसिसिटी. अस्सलाम वालेकुम.